अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। Yes, sir. यस ओके। Yes, sir. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। स्पेस का भी इशू है कि कोई ऐसी काम पीसफुल जगह हो जहाँ पे इंटरनेट भी अवेलेबल हो, और ये करना भी यूनिवर्सिटी से है, तो इसलिए एक तो इशू ये है। दूसरा जो है वो ऑनलाइन में कोई भी इशू हो सकता है, जैसे अभी जूम के लिंक के साथ हुआ। तो हम क्लास की तरफ जाते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रिसर्च। तो वी सेड दैट द रिसर्च इज़ वे ऑफ answering questions, but it is different than we do in our daily life, because in our daily life we get answers without any systematic way and without making observations ourselves. तो रिसर्च में हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, स्टेप वाइज, और फिर हम डाटा या इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं। रिसर्च हमने करनी क्यों है? रिसर्च हमने तब करनी है जब किसी क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट ना करता हो। अगर क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। या फिर एक चीज़ ये कि या तो गैप हो, कहीं पे किसी भी प्रॉब्लम का आपके पास सलूशन ना हो, कोई डाटा में गैप हो, तो हम उसको रिसर्च करेंगे, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर गैप ना हो तो फिर हम ऑलरेडी जो अवेलेबल लिटरेचर होता है, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी को यूज़ करेंगे। सिमिलरली another thing that we do research is to validate. For example, previously we have data that like we were using example metformin affecting kidneys. We have a small study that shows that it is affecting or not affecting kidneys, uh, but we are not confirmed. We want to validate that. We want to check, or we want to repeat it. That is the related to more with reliability. We want to check the reliability of the previous methods, procedures, techniques that we used to find out the effect of metformin on kidneys. So we can retake that research in case where knowledge is not that consolidated, it is not that good or valid. So we have to check its validity and reliability. So we can retake research, but in rare cases. Mean most of the time it is extension of the knowledge or to fill the gaps. तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें उस पर टाइम और एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो ऐसा आंसर है जो जिसको सारे लोग मानते हैं और उसको काफ़ी दफ़ा रिपीट करके हमें पता चल गया कि वो फिनोमिना वैसा ही है, तो फिर हमें उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट है किडनीज़ पे, तो अब दोबारा से उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, तो हमें इसको दोबारा रिपीट करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर डूइंग रिसर्च ऑन प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ इन रावलपिंडी, for example last year the prevalence was like 2%, and this year we don't know because time has lapsed. So we have to check we can check the prevalence of diabetes again. It is same work, but it is again in the new time, so it is called as a new work. But if a study has done prevalence
in a hospital that is like Holy Family Hospital. And we, at the same time, we can take another research in MH Hospital in order to compare either the prevalence is similar between two regions or different. Similarly, if a person has taken research and we are objecting his procedure methods and techniques, so we can retake that and validate or to check the repeatability of that method and procedure and techniques. So uh, the types of research we were going to study. So there are mainly on the basis of three things we divide research into different types. It is again man-made things. They are not the physical things. So the definitions, they can overlap, they can change from person to person or from book to book, but the main concept is same. So on the basis of applications, on the basis of objectives, on the basis of inquiry mode, we can categorize research into different groups. On the basis of application mean either research is applied or it is basic research. There are two main types of researches on the basis of application. Either it is used for the betterment of any uh, thing, can be